अष्टांग हृदय सूत्रस्थान पंचदशोऽध्यायः। अथात शोधनादिगण संग्रहम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति हस्माहोरात्रेयादयो महर्षयः। या अध्यायामध्ये वाग्भटाने अनुष्टुप छंदा व्यतिरिक्त अनेक वेगवेगळ्या प्रकारची वृत्त वापरलेली आहेत. त्यामुळे बहुधा प्रत्येक श्लोकाला चाल ही बदलत जाते. त्यामुळे हा अध्याय म्हणण्याची सवय लागली तर बहुतेक सर्व श्लोक योग्य पद्धतीने चालीसहित उच्चारणाने म्हणता येतात. हा पहिला श्लोक जो आहे तो मालिनी या वृत्तातला आहे. अतिशय तालबद्ध लयबद्ध सांगीतिक गुण असलेला हा असा वृत्ताचा महिमा असल्यामुळे तो आपल्याला मनोरंजक आणि त्यामुळे स्मृतीवरती लवकर त्याचा चांगला परिणाम साधला जातो. मदन मधुकलंबा निंबबिंबी विशाला त्रपुसकुटज मूर्वा देवदानी कृनिघ्नम विदुल दहन चित्रा कोशवत्यो करंजः कणलवणवचैला सर्षपाश्चर्दनानि निकुंभ कुंभ त्रिफलागवाक्षि स्नुक्षंखिनी नीलिनी बिल्वकानि शम्याककं पिल्लकहेम दुग्धा दुग्धैञ्च मूत्रैञ्च विरेचनानि मदनकुटज कुष्ठदेवदाली मधुकवचादशमूलदारुरस्नाः यवमिषिकृतवेधनं कुलत्था मधुलवणं त्रिवृता निरूहणानि वेल्लापामार्गव्योषदार्वी सुराला बीजं शैरीशं वार्हतं शैग्रवञ्च सारो माधूकस्सैन्धवं तार्क्षशैलं तृप्यो पृथ्वीकाशोधयन्त्युत्तमाङ्गं भद्रदारुणतं कुष्ठं दशमूलं बलाद्वयं वायुं वीरतरादिश्च विदार्यादिश्च नाशयेत् दूर्वानन्तानिम्बवासात्मगुप्ता गुन्द्राभीरुशीतपाकी प्रियङ्गुः न्यग्रोदादिः पद्मकादिस्थिरे द्वे पद्मं वन्यं सादिवादिश्च पित्तम् आरग्वदादिरर्कादिर्मुष्ककाद्योसनादिकः सुरसादिः समुस्तादिर्वत्सकादिर्बलासजित् जीवन्ती काकोल्यो मेदे द्वे मुद्गमाश्वपर्ण्यौ च ऋष्वकजीवकमधुकञ्चेति गणो जीवनीयाख्यः विदारि पञ्चाङ्गुलवृश्चिकाली वृश्चीवदेवाह्वयशूर्पपर्ण्यः कण्डूकरी जीवनरस्वतौग्ने द्वे पञ्चके गोपसुतात्रिपादी विदार्यादिरयं हृद्यो बृहणो वातपित्तः शोषगुल्माङ्गमरदोर्ध्वश्वासकासहरो गणः सार्यो क्षीरकाश्मर्य मधुकशिशिरद्वयं यष्टीपरूषकं हन्ति दाहपित्तासरतृज्वरान् पद्मकपुण्ड्रवृद्धितगर्भशृङ्गमृतादशजीवनसंज्ञाः सन्यकराघ्नन्तीर्णपित्तं प्रीणन जीवनबृहणवृषाः परूषकं वराद्राक्षा कट्फलं कटकात्फलं राजाउभं दाडिमं शाकं तृणमूत्रामयवातजित् अञ्जनं फलिनीमांसी पद्मोत्पलरसाञ्जनं शैलामधुकनागाउभं विषान्तरताः पित्तनुत पटोलकटुरोहिणी चन्दनं मधुस्रवगुडूचि पाठान्वितं निहन्ति कफपित्तकुष्ठज्वरान् विषं वमिम् अरोचकं कामलाम् गुडूचि पद्मकारिष्ट धानकारक्तचन्दनं पित्तश्लेष्मज्वरच्छर्दि दाहतृष्णाघ्नमग्निकृत आरग्वदेन्द्र इव पाटली काकतिक्ता निम्बामृतामुदरसा वृक्षपाठाः भुनिम्बसैर्यकपटोलकरञ्जयुग्म सप्तच्छदाग्नि सुषवी फलबाणघुण्टाः आरग्वधादिर्जयति छर्दिपुष्ठविषज्वरान् कफं कण्डुं प्रमेहं च दुष्टव्रणनिशोधनः असनति निशभूर्जश्वेतवाः प्रकीर्याः खदिरकदरभण्डी शिंशुपामेषु शृङ्गः त्रिहिमतलपलाशा जुङ्गकशाकशालो प्रमुखधवकलिङ्गच्छागकर्णाश्वकर्णाः असनादिर्विजयते चित्रपुष्ठकपकृमिन् माण्डूगं प्रमेहं च मेदो दूषनिबर्हणः वरुणशैर्यकयुग्मशतावरिदहनमोरटबिल्वविषाणिकाः द्विबृहती द्विकरञ्जया द्वयं बहलपल्लवदर्भरुजाकराः
वरुणादिकफं मेदो मन्दाग्नित्वं नियच्छति आढ्यवातं शिरशूलं गुल्मञ्चान्तस्तविद्रधिम् ऊषकस्तुत्तकं हिङ्गूर्कासी सद्वयसैन्धवं सशिराजितकृच्छ्राश्म गुल्ममेदकपापहम् वेल्लन्तरारणिकमूकवृषाश्मभेद गोकण्टकेत्कटसहाचरमाणकाशाः वृक्षादनीनलकुशद्वयगुण्ठगुन्द्रा भल्लूकमोरटपुरण्टककदम्बपार्थाः वरवो वीरतराद्योऽयं हन्ति वातकृतान् गदान् अश्मरीशरकरामूत्रकृच्छ्राघातरुजाहरः रोदशावरकरोद्रपलाशाजङ्गिणी सरलकट्फलयुक्ताः कुत्सिताम्बकदलीगतशोकाशैलवालुपरिपेलवमोचाः एष रोध्रादिको नाम मेदः कफहरो गणः योनिदोषहरस्तम्भी वर्ण्यो विश्वविनाशनः अर्कालर्कौ नागदन्ती विशल्या भार्गीरास्नावृश्चिकालिप्रकीर्या प्रत्यक्पुष्टीपीततैलोदकीर्या श्वेता युग्मं तापसानां च वृक्षः अयम् अर्कादिको वर्गः कफमेदोषापहः कुमिकृमिकुष्ठप्रशमनो विशेषाद्व्रणशोधनः सुरसयुगफणिज्यं कालमालाविडङ्गं खरगसौर्षकर्णी कट्फलं कासमर्दः क्षवकसरसि भारङ्गी कार्मुकः काकमाची कुलहलविषमुष्टि भूस्तृणो भूतकेशी सुरसादिर्गणश्लेष्म मेधकृमिनिषूदनः प्रतिश्चायारुचिश्वास कासघ्नो व्रणशोधनः मुष्ककसृग्वराद्वीपी पलाशधवशिंशिपाः गुल्ममेहाश्मरी पाण्डु मेदोर्षकफशुक्रजित् वत्सकमूर्वाभार्गिकटुकामरिचङ्घुणप्रिया च गण्डीरम् एलापाठाजाजिकट्वङ्गफलाजमोदसिद्धार्थवचाः जीरकहिङ्गुविडङ्गं पशुगन्धा पञ्चकोलकं हन्ति चलकफमेधः पीनसगुल्मज्वरशूलदुर्नाम्नः वचातिलदेवाह्व नागरातिषाभयाः हरिद्राद्वयेष्ट्याह्व कलशीकुटजोद्भवाः वचा हरिद्रादिगणौ आमाति सारनाशनौ मेधकफाढ्यपवनस्तन्यदोषनिबर्हणौ प्रियङ्गुपुष्पाञ्जनयुग्मपद्माः पद्माद्रजो योजनवल्यनन्ता मानद्रुमोमोचरसः समङ्गः पुन्नागशीतं वदनीयहेतुः अम्विष्ठामधुकं नमस्करी नन्दीवृक्षपलाशकच्छूराः रौद्रं धातके बिल्वपेशिके कट्वङ्गः कमलोद्भवं रजः गणौ प्रियङ्गं वष्टाधि पक्वाति सारनाशनौ सन्धानीयौ हितौ पित्ते व्रणानामपि रोपणौ मुष्टावचाग्निर्निषाद्वितिक्ता मल्लातपाठा त्रिफलाविषाख्य पुष्ठं त्रुटिं हैमवतीं च योनिस्तन्यामयघ्नामलपाचनाश्च न्यग्रोदपिप्पलसदाफलरोध्रयुग्मं जम्बूर्वयार्जुनकपीतनसोमवलकाः लक्षाम्रमञ्जूलपियालपलाशनन्दी कूलीकदम्बविरलामधुकं मधूकं न्यग्रोधादिर्गणो व्रण्यः सङ्ग्राही भङ्गनसाधनः मेधस्तिक्तास्त्रतृड्डाह योनिरोगनिबर्हणः एलायुग्मतुरुष्कपुष्पफलिनी मंसी जलध्यामकम् स्पृक्काचोरकचोचपत्रतगर्स्थौनेयजातिरथाः शुक्तिर्व्याघ्रनकोमराहुमगुरुश्रीवासककुङ्कुमं चण्डागुग्गुलदेवधूपखपुराः पुन्नागनागावयम् एलादिको वातकफौषं च विनियच्छति वर्णप्रसादनः कंडूपीठिकाकोटनाशनः। हे शार्दूल विक्रीडित वृत्त आहे. हे थोडंसं दीर्घ म्हटलं तर अजून छान वाटतं. शार्दूल म्हणजे सिंह, विक्रीडित म्हणजे त्याची आरोळी. तर सिंहाची डरकाळी आरोळी कशी दीर्घ आणि परिणामकारक असते तसे या सूत्राचं या श्लोकाचं उच्चारण व्हायला हवं. एला युग्मतुरुष्कपुष्ठफलिनी मंसी जलध्यामुकम् स्पृक्काचोरकचोचपत्रतगरस्थौनेयजातिरथाः शुक्तिर्व्याघ्रनकोमराहुमगुरुश्रीवासकः कुङ्कुमम् चण्डागुग्गुलदेवधूपखपुराः पुन्नागनागावयम् एलादिको वातकफौषं च विनियच्छति वर्णप्रसादनः कण्डूपीठिकाकोटनाशनः। श्यामादन्ति द्रवन्ति क्रमुककुटरणा शङ्खिनी चरमसाह्वा स्वर्णक्षीरी गवाक्षी शिखरी रजनकच्छिन्नरोहाकरञ्जा बस्तान् त्रिव्याधिधातो बहुलबहुरसतीक्ष्णवृक्षात् फलानि
क्षामाद्यो हन्ति गुल्मं विषमृचिकफोरुद्रजं मूत्रकृच्छ्रम् त्रयस्त्रिंशत् इति प्रोक्ता वर्गास्तेष्वतुलाभतः युञ्जात्तद्विधमन्यच्च द्रव्यं जैहानयौगिकम् एते वर्गा दोषदूष्याद्यपेक्ष कल्कस्क्वासस्नेहलेहादियुक्ताः पानेन स्तेन वासनेऽन्तर्बहिर्वा लेपाभ्यङ्गैर्घन्ति रोगान् सुकृच्छान् इति सूत्रस्थाने 15 श्रीगजाननार्पणमस्तु।